Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Love You Shakespeare series and we have been discussing Measure for Measure. We have already completed the plot summary of Measure for Measure and in today's class we will talk about some of the critical issues raised in this play. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening PK Learning, welcome. These are the timings of your classes Monday to Friday at 8:30 p.m. Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. Okay, so let's start. We have already completed the plot summary of Measure for Measure and today we will talk about some of the critical issues raised in this play. Good evening Cherry, good evening Pooja, good evening Yogesh, welcome. So let's start. First of all, Measure for Measure as a problem play. So we will discuss that. Okay. So in the first folio, which was published in 1623, I have already mentioned that Measure for Measure was first published in the first folio, and in that edition, it was categorized as a comedy. For the first time, it was categorized as a comedy, and Anne Barton ने अपने जो एडिशन है रिवर साइड शेक्सपियर उसमें उन्होंने बताया था, ठीक है, द लास्ट कॉमेडी शेक्सपियर एवर रोट, द लास्ट कॉमेडी शेक्सपियर एवर रोट. So Anne Barton in Riverside Shakespeare mentioned that Measure for Measure is the last comedy Shakespeare ever wrote. F.S. Bose coined the term for plays like Measure for Measure, All's Well That Ends Well, Troilus and Cressida. So these plays are known as problem plays and this term was coined by F.S. Bose for the first time. तो उन्होंने ये बताया था कि no, it is not a comedy, it is actually a problem play. And शेक्सपियर के कई सारे plays ऐसे हैं जो problem play. Good evening Elena, welcome. कई सारे ऐसे plays हैं जो problem plays. So Measure for Measure, All's Well That Ends Well, Troilus and Cressida. Throughout these plays, we move along dim, untrodden paths. At the close, our feeling is neither of simple joy nor pain. We are excited, fascinated, perplexed, for the issues raised preclude a completely satisfactory outcome. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है एफ.एस. बोस का. एफ.एस. बोस ने ये बताया था कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम प्ले. So according to him, there are some keywords. According to him, in problem plays, we have some dim, untrodden paths, some issues which are enigmatic, which are problematized. And our feeling is neither of simple joy nor pain. अगर joy और pain directly है तो वो तो comedy और tragedy easily बन जाएगा. But there are some feelings which are not purely joy or not purely pain. We are excited, fascinated and perplexed, for the issues raised preclude a completely satisfactory outcome. So some issues excite us, some issues make us feel perplexed and it fails to achieve a satisfactory outcome. So such issues which are problematic, which are not simply comic or tragic, and in the plays which have such kind of scenes, such kind of issues which are not properly concluded, that is known as the problem. Good evening Vedvyasji, welcome. Good evening Rajkishore, welcome. Okay, so that is about problem play. So problem play deals with the perplexing and distressing complications of human life.
So this is the key word. It is talking about such a problem. Obviously, problem play means it has a problem. But what kind of problem? The problem which we cannot solve or which has some kind of complications, some kind of perplexity. Okay. The structure is also complex. It is high seriousness. Okay. So the play has highly serious elements, and the structure is also complex, and the play raises various questions about some issues. So, Measure for Measure is a problem play because it raises some questions about justice and morality. So, we cannot categorize it as a comedy because issues like justice and morality, these are very sensitive issues and also very controversial, right? तो इन चीजों के ऊपर बात की गई है मेजर फॉर मेजर में. दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू एफिस बोस इट इज अ प्रॉब्लम. ओके. तो देन एक बहुत ही फेमस कोटेशन है व्हाइल डिस्कसिंग प्रॉब्लम प्ले. वी मस्ट मेंशन दैट थॉमस हेयूड. Remember Thomas Heywood, who is the author of the interludes like Four P's. So Thomas Heywood wrote these lines: comedies begin in trouble and end in peace. Tragedies begin in calms and end in tempest. ठीक है. सो कॉमेडी में प्रॉब्लम होता है शुरुआत में, बट एट द एंड ऑफ द कॉमेडी एवरीथिंग इज रिजॉल्व प्रॉपर्ली. बट ट्रेजेडी में एंड में कोई एक धमाका होता है, बट शुरुआत में बहुत ही पीसफुली प्ले चलता है. ठीक है. तो अगर हम इस डेफिनेशन को लेकर आगे चले तो इन दैट सेंस मेजर फॉर मेजर ऑल्सो ओपन्स विद अ ट्रबल. क्या ट्रबल है? हमने बताया था द ड्यूक इज इन अ हरी टू लीव. In the first scene of the first act, we have found that the Duke, हाँ Duke का नाम मैंने बताना भूल गया. Duke का नाम है Vincentio. So the Duke Vincentio is in a hurry to leave because he has to do some peace treaties. He has to sign some peace treaties with the kings of Hungary and others. So he decides to leave and he is in a haste. तो बहुत ही मतलब इमीडिएटली वो अपने चार्ज हैंड ओवर कर रहे हैं एंजेलो को एंड वो डायरेक्टली लीव कर. So in the first act we are seeing in the first scene specifically we are seeing that the main ruler of a dukedom, he is automatically vanished and एक दूसरे जगह में कोई एक पर्सन आ रहे हैं जो रूल कर रहे हैं. मतलब हमको पता ही नहीं है ड्यूक के बारे में. अचानक हमें ये चीजें देखने को मिलता है कि ड्यूक अपने ड्यूकडम छोड़कर बाहर जा. Good evening, Abdul Matin. Welcome. Yes, pardoner, palmer, apothecary, and peddler. Absolutely, four P's. तो ये एक ट्रबल है जिसके थ्रू प्ले स्टार्ट होता है. Now the first crisis also appears, that is Claudio's arrest. Angelo orders for Claudio's arrest on the charge of fornication. So the first crisis appears in the form of Claudio's arrest and इसी इवेंट को सेंटर में रखकर पूरे के पूरे प्ले आगे बढ़ते हैं. एंड द इश्यूज ऑफ जस्टिस appears with this crisis. And when Claudio is arrested, a question arises whether it is justified for Angelo to give such punishment, because Angelo himself is doing such a crime. Angelo himself is doing such a crime when Angelo proposes or rather Angelo lusts for Isabella. So he is also doing the same kind of crime, and is it justified to give death sentence to a person when the officer in charge or the duke in charge himself is guilty of that? So इस टाइप के कुछ questions arise किए गए हैं. And Angelo says very properly that law must be equal for all. No lawbreakers will be pardoned. When Isabella requests Angelo that please save my brother, then Angelo says that no, he is a lawbreaker. He has done something immoral and I will not pardon any immoral person, so he must be executed. And the focus is on the conflict between the individual and the law. तो इसके ऊपर मेन फोकस है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द लॉ. ठीक है. Another crisis appears when Angelo asks for Isabella. This is another crisis, and thereon a conflict arises between the ethics of a ruler and the natural desires of a man.
which one should we prioritize? Our baser instinct, like bodily desires, or the ethics of a ruler? So Angelo is in great dilemma. Angelo's character is in great dilemma, that which one we should accept, Angelo as a ruler or Angelo as a man. ठीक है, तो इस टाइप के कुछ कंफ्यूजिंग इश्यूज रेज किए गए. Claudio is imprisoned due to violation of chastity, and he will be pardoned after the violation of his sister's chastity. So it is a very interesting paradox in the play, right? That violation of chastity or taking away of virginity, this is the main point. ठीक है, तो क्लॉडियो को इसी कारण के लिए अरेस्ट किया गया, बिकॉज ही हैज इम्प्रेग्नेटेड जूलियट आउटसाइड द बॉन्डिंग ऑफ मैरिज. बट ये भी एक कंडीशन एंजेलो ने दे दिया कि इफ यू वांट टू फ्री क्लॉडियो, देन यू मस्ट शेयर योर वर्जिनिटी विथ मी. So this is a very paradoxical thing, that one man can be pardoned only when others' chastity is at stake. Okay, so this kind of complications are there in the play. Isabella's denial is interpreted in various ways. Isabella at first denies to accept that. तो इससे क्वेश्चन बनता है कि which one is more important, life or virginity? And the debate is inconclusive. It is open to interpretation. Which one is important, life or virginity? Because Isabella at first says that no, I am not ready to sacrifice my chastity. It is better that my brother may be executed. ठीक है, तो ये कितने हद तक जस्टिफाइड है कि आप अपने भाई को सूली पर चढ़ा रहे हो to protect your virginity? So which one is more important for a woman or for a sister? Should Isabella preserve her virginity as a nun, or should Isabella prioritize her role as a sister? तो कौन सी चीज को हमें आगे लेकर जाना है एंड कौन सी चीज के ऊपर हमें फोकस ज्यादा करना है, ये एक डिबेट अराइज किया गया है प्ले में. ठीक है, पायोला डायोनिसस, who is she is an actress who played the role of Isabella. ठीक है, शी प्लेड द रोल ऑफ इसाबेला. तो उनका ये इंटरप्रिटेशन था कि इसाबेला क्रेव्स फॉर सिंप्लिसिटी एंड ऑर्डर एंड सर्टेनिटी, हर बिलीफ, बट इज फेस्ड विथ कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्रडिक्शन. So she is simple, but her belief is very much contradictory. She vows to be a nun, and at the same time she accepts herself as the wife of Duke. So at the end of the play में हमें देखने को मिलता है. So this kind of complications in Isabella's character is also there. Okay. So then क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम है प्ले में? Mariana loves Angelo even after his betrayal. Absolutely, we have already discussed the plot summary. तो इससे क्वेश्चन बनता है कि will their marriage be justified? Because Angelo once deserted Mariana only because she could not offer him the proper dowry. तो क्या उसी पर्सन को फिर से एक्सेप्ट करना एज द हस्बैंड इज जस्टिफाइड और नॉट? ये क्वेश्चन है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ड्यूक फोर्सेस लूसियो टू मैरी, सॉरी नॉट मारियाना, टू मैरी मिस्ट्रेस ओवरटन. ड्यूक फोर्सेस लूसियो टू मैरी मिस्ट्रेस ओवरटन. विल दे बी हैप्पी? अगर ऐसा हो तो क्या वो हैप्पीली लिव कर सकते हैं? बिकॉज इट इज अ फोर्स्ड मैरिज. लूसियो का मन नहीं था, बट लूसियो इज फोर्स्ड टू मैरी मिस्ट्रेस ओवरटन. सो विल इट बी अ हैप्पी मैरिज? इट इज अनदर क्वेश्चन. ड्यूक proposes to marry Isabella and she is in silence. तो ये हमने देखा कि इसाबेला का कोई रिप्लाई नहीं आया. जब ड्यूक ने ये बताया कि आई वांट टू मैरी यू, इसाबेला रिमेन्स इन साइलेंस. तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये ऐसे इंटरप्रेट किया है कि इसाबेला एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, बट एक्चुअली ये प्ले में बताया नहीं गया है कि इसाबेला ने एक्सेप्ट किया है या नहीं. तो विल शी एग्री और नॉट? हाउ फॉर इज द प्रपोजल जस्टिफाइड? अगर इसाबेला एग्री कर भी लेते हैं तो ये कितना जस्टिफाइड? These are the issues which are open to discuss. So in this play we find that there are many questions but less answers. And the urban life is presented as darkly comic, जिसमें बहुत ही सारे immorality है. ठीक है, immorality, loopholes, hypocrisy,
These things are prioritized in measure for measure, so it cannot be called a comedy in proper way. So it is rightly described as a problem play. Yes, absolutely right. Mariana is a poem by Tennyson, inspired from that character. Yes. Okay, so that is about this issue as a problem play. Now, next important issue है theme of crime, punishment and justice. जिसके साथ टाइटल का लिंक है measure for measure, ठीक है, which means tit for tat. तो क्राइम, पनिशमेंट एंड जस्टिस का क्या थी? तो Isabella cries out in this play once, justice, 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 justice. So Isabella cries out when the Duke appears in a proper manner at the almost at the end of the play. When the Duke appears and the Duke demands justice, and the Duke questions Isabella everything, then Isabella demand कर रहे हैं justice from the Duke, because Isabella already knows that her brother Claudio has already been executed. ठीक है, तो Isabella Duke के पास जाकर justice मांगे. Now when Isabella repeats these words justice justice for 4 times, it appears nonsensical and highlights the hollowness of its meaning. तो ये बहुत ही कॉमन चीज है कि जो चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है. तो जो भी चीजें मतलब ये पढ़ाई के लिए एप्लीकेबल नहीं है. इन द केस ऑफ स्टडी, रिपीटेशन विल हेल्प यू टू रिमेम्बर, एंड रिपीट हम उसी चीज को करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है. बट स्टडी से बाहर जाकर आप सोचो, नॉर्मल लाइफ में अगर एक ही बात हम बार बार कहें तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, ठीक है. सपोज कोई एक पर्सन एक बहुत सीरियस इशू में बात कर रहे हैं, उनके एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी वो आते हैं तब भी वो सेम प्रॉब्लम के बारे में बात, तो लोग ज्यादा देर तक उनको एक्सेप्ट नहीं करें, ठीक है. तो इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग दैट व्हेन वन पर्टिकुलर लाइन और वन पर्टिकुलर वर्ड इज रिपीटेड, so its meaning becomes very hollow. So here also the word justice is repeated so much that the actual meaning is hollow. The play opens with a problem of lawlessness in Vienna. The Duke is absent, so there is lawlessness. मतलब वही लाइन जो W.B. Yeats ने यूज किया था कि things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world. So the Duke is not here, and so there is anarchy. Angelo gains the power and orders for complete abolition of prostitution. Angelo is an extreme beholder or extreme protector of justice. वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एंड इसी स्ट्रिक्टनेस के कारण वो अपने ही लाइफ में जस्टिस को फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है. ही imprisons Claudio on the charge of fornication. This is one step, but at the same time he himself takes the same crime when he lusts for Isabella, as I have already told you. The prison bar, this is very important. Prison एक बहुत important setting है, and provost का character भी बहुत बार repeated I have played. So the prison bar becomes useless and meaningless. The man outside the bar can also be a criminal. So Angelo is outside the bar. Angelo is also a criminal. And Angelo ने जो judgment दिया है क्लॉडियो को, वो भी बड़ा vague judgment है. It blurs the distinction between sin and crime. कौन सा sin है and कौन सा crime, इन दोनों को एंजेलो ने blur कर दिया. Angelo orders for Claudio's execution, which raises another question. Can capital punishment make an end of crime in Vienna? Is it only sufficient to give capital punishment to the criminal? और हमें कुछ और चीजों के बारे में भी सोचना है. तो ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है. Now, Samuel Johnson ने एक कमेंट किया था. It is by Samuel Johnson. Angelo's crimes were such as must sufficiently justify punishment. And I believe every reader feels some indignation when he finds him spared. So this is also very debatable that Angelo ने कितने सारे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो उनको क्यों कोई सजा नहीं मिलती? बिकॉज अगर क्लॉडियो को सजा मिलना चाहिए तो एंजेलो ने भी तो मारियाना के साथ गलती किया था, तो एंजेलो को सजा क्यों नहीं मिल रहा है? एंजेलो क्यों बड़ी आसानी से वो एस्केप कर रहे हैं? तो इट इज अ काइंड ऑफ इंडिग्नेशन, एंड ये हर रीडर के मन में ये क्वेश्चन है कि एंजेलो का एक पनिशमेंट होना चाहिए था,
बट उनको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है. So it is a kind of indignation inside the reader's mind that they cannot see a proper poetic justice in this play, according to Samuel Johnson. Isabella agrees that God is the only judge, so earthly punishments are meaningless. She herself questions the necessity of giving punishment. AC Swinburne ने ये कमेंट किया था. AC Swinburne, justice is not merely evaded or ignored or even defied. She is both in the older and newer sense of the word directly and deliberately baffled. So in this place, the idea of justice is very ambivalent. It is present in older form also and it is also modified. तो कौन सा जस्टिस है और कौन सा जस्टिस नहीं है, ये दोनों बहुत ही आर्बिट्ररी बन चुका है इस प्ले. ठीक है. The marriages shown at the end of the play, which actually makes it a comedy. So the marriages show that the real justice lies in healthy thinking and wise planning, and happiness can be achieved through negotiation. तो अल्टीमेटली एक नेगोशिएशन का एटमोस्फेयर क्रिएट हो रहा है कि सबको माफ कर दो, जिन्होंने भी गलती किया है सबको माफ करके अपने अपने लाइफ को एंजॉय करो. The main aim of justice is to optimize a retrospective feeling in the mind of a criminal that would bring repentance in him. That is why the prison house in today's world is known as correction house. ठीक है. तो इसमें पनिशमेंट देना मेन पर्पस नहीं है. इसका मेन पर्पस है कि क्रिमिनल को उनके माइंडसेट को चेंज करना, ताकि जब वो करेक्शन हाउस से बाहर आएगा, वो प्रिजन से बाहर आएगा, उनके दिमाग में क्रिमिनल टेंडेंसीज नहीं होंगे. वो ट्राई करेंगे किसी ऑनेस्ट तरीकों से बचने. ठीक है. So it is mentioned in the play also. Okay. Next and the last issue of today's class, that is theme of substitution. ये भी एक बहुत important part है measure for vision. Substitution or replacement. The whole play is based on replacement. Right? देखो, in the first scene, the Duke is substituted by Angelo, and the Duke praises him as far more superior as a ruler than him. तो एंजेलो को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. वो ड्यूक को ये कह रहा है कि प्लीज टेक अ टेस्ट ऑफ मी वेदर आई एम एलिजिबल टू फॉलो और टू रूल द ड्यूकडम और नॉट. बट ड्यूक कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है. यू कैन रूल इट प्रॉपरली, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक अ टेस्ट ऑफ योरसेल्फ. एंड ऑल्सो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो आप अभी अभी ड्यूकडम का चार्जेस ले लो एंड आई विल हैव टू लीव. ठीक है. सो ये एक सब्स्टिट्यूशन है. इस सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कमेंट किया है अलेक्जेंडर लेगाटी. उन्होंने बताया है कि द ड्यूक पिक्स फॉर द रोल नॉट समवन हु एंजॉयज द लाइमलाइट, but someone who in this respect is like himself, and Angelo is made to undergo worse than this. So Alexander Legati is saying that Angelo is not the suitable person on whom you can give the charge of the dukedom. बट ड्यूक ने एंजेलो को ही चुना. ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रॉन्ग डिसीजन. एंड इससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रूलर एन एडिक्वेट मीन्स टू ब्रिंग बैक सोसाइटीज हेल्थ. क्या यही एक समाधान है कि रूलर को हम चेंज कर दे, रूलर को चेंज करते ही क्या सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन. नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन हमने देखा वो ये था कि मारियाना रिप्लेसेस इसाबेला बिसाइड एंजेलोस बेड, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द ड्यूक. तो ये एक एलिजाबेथन टाइम का एक रूल था कि इफ अ मैन कॉन्ट्रैक्ट स्पाउसल्स कंडीशनली विद अ वुमन and in the meantime he has access to her as to his wife, these doubtful spousals do thereby pass into matrimony. जो एंजेलो ने एक्चुअली मारियाना के साथ किया. मारियाना is his betrothed wife, and finally Angelo broke off the engagement. तो ऑटोमेटिकली मारियाना उनके वाइफ ही बन जाती. ठीक है. तो एंजेलो अननोइंगली स्लीप्स विथ मारियाना. तो ये दोनों चीज के बारे में कंट्रोवर्सी चलता है, पैशनेट सेक्सुअलिटी और वल्गर क्यूरियोसिटी, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड दिस सब्स्टिट्यूशन इज अ वाइज सब्स्टिट्यूशन बिकॉज इट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट. तो प्लान ड्यूक ने किया था कि टू रिप्लेस इसाबेला विथ मारियाना, इट इज अ वेरी गुड डिसीजन.
तो इससे क्या होगा, इससे एट द एंड एंजेलो एंड मारियाना का रिलेशनशिप भी ठीक ठाक हो जाते हैं एंड इसाबेला कैन ऑल्सो मैरी द ड्यूक. ओके. नाउ, तो ये है अबाउट द इशू ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो दीज आर द क्रिटिकल इश्यूज एंड आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस इस प्ले में है जिसका प्रॉपर आंसर शेक्सपियर ने नहीं दिया है एंड इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन. दैट इज व्हाई मेजर फॉर मेजर इज अ ट्रू प्रॉब्लम. Okay, so that is about measure for measure. We have completed the whole thing, the plot summary and the critical issues. I hope after watching these videos you can read the text properly and there will be no problem or no confusion in it. Okay, Elena, please message me in the Telegram channel, in the in my Telegram account personally, and I will get back. Okay, so sure. So that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. So next class will be tomorrow at 8:30 p.m. and tomorrow we will do eco-criticism. Tomorrow we will do eco-criticism. Okay. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all tomorrow at 8:30 p.m.